discuss about the HTML opening tag and closing tag. Okay, and in this lecture we discuss about the headings and what is the meta tags and what is the comments, how to write comment in HTML code. Okay, let's begin it. Okay, so discussing about the meta tags, we create our boilerplate here. Okay, and the meta tags are written in between the heading. Okay, and we see here the meta cat set UTF-8, meta cat set viewport, and also title are here. Okay, title of the document are also here. Okay, and व्हाट इज मेटा टैग, मेटा टैग क्या होता है? ओके, तो मेटा टैग वो होता है जो वेबसाइट को डिस्क्राइब करने के लिए लिखने पड़ते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेटा. ओके, तो it is all about the information about information. Okay, and now we discuss about the metadata. It is used to set of data that describe and gives information about other data. Okay, and let's discuss about body. We see here the body tag. Okay, and in this body tag हम क्या करते हैं कि वेब पेज का कंटेंट हम बॉडी के अंदर लिखते हैं. ओके, जितने भी हमारे वेब पेज के कंटेंट होते हैं, जैसे HTML के लिए हम हेडिंग लिखते हैं, अपना कुछ बटन वगैरह लगाते हैं, कुछ भी हम लिखना है, हमें पैराग्राफ्स वगैरह कुछ भी लिखना है, तो हम लोग बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं. ओके, और इसके लिए से मैं आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ. ओके, तो वी राइट हियर द पैराग्राफ हियर. ओके, एंड वी यूज lorem. ओके, and we see here the paragraph is written there, and also we console that there is the output. Okay, it is written in body tag. Okay, and after that we now talk about meta tags. What is meta tags? And now previous discussing about meta tags. Meta tags are under the head tag. Okay, and now talk about comment. What is comment and how to give comment? Okay, in the HTML code to write the comment. Okay, this is how to write a comment. Okay, in this we write the comment. This is there to lecture. This is the. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेड के अंदर क्या लिखा जाता है. तो मेटा कैट सेट इक्वल टू UTF-8 जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, तो वी टॉक अबाउट दैट. ओके, तो ये इट इज ए कैरेक्टर सेट. ओके, मेटा टैग का काम मेनली SEO में यूज किया जाता है. SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पर आवर अदर क्वेश्चन इज मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है. एंड कंटेंट विथ इक्वल टू डिवाइस वेट इनिशियल स्केल 1.0. इसका मतलब क्या होता है? इनिशियल स्केल 1.0 दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि जो अपना ये क्या करता है कि इट सेट विथ और विथ इज इक्वल टू डिवाइस वेट. ओके, ताकि आपका पेज है वो सही से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स सभी में रिस्पॉन्सिव दिख सके. ओके, एंड लेट्स टॉक अबाउट आवर टॉपिक फॉर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे. मेटा नेम इक्वल टू रोबोट्स. ओके, एंड कंटेंट इक्वल टू इंडेक्स फॉलो. ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हम वेबसाइट में अपनी वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं, या इसके लिखने के बाद हम अपने वेबसाइट को स्क्रॉल कर सकते हैं अप टू डाउन. ओके, क्योंकि विदाउट राइट दैट इज नॉट पॉसिबल टू स्क्रॉल आवर वेबसाइट राइट अप टू डाउन एंड डाउन टू अप. ओके, एंड दिस इज फॉर टुडे, and we will meet tomorrow. We discuss about the external CSS, how to add external JavaScript in HTML, and what is the guys. We will meet tomorrow for other lecture. Okay, thank you. HT Education.